अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग बहुत बड़े साइज़ वाले क्रैब्स लेके आए हैं। स्पेशली महाराष्ट्र स्टाइल में आज क्रैब्स ग्रेवी करी बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम है। इसकी कटिंग की प्रोसेस भी देखते हुए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। मेन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक पेस्ट बना के रखेंगे। पहले उसके लिए हम लोग रॉ स्पाइसेस रोस्ट करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग ब्लैक पेपर और कोरिएंडर सीड्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ड्राई रेड चिल्ली। इन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह रोस्ट होते वक्त हम लोग इसमें कोकोनट पीसेस भी ऐड करेंगे। इन सारे रोस्टेड मसालों को भी पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऑनियन पेस्ट और टमाटो पेस्ट भी प्रिपेयर करेंगे। सारे पेस्ट बना के तैयार है। हम लोग मेन प्रोसेस शुरू करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें जीरा ऐड करेंगे।
ज़ीरा के बाद हम लोग इसमें स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। चॉप्ड जिंजर और गार्लिक भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसी में जो पहले ही पेस्ट करके रखे थे ऑनियंस पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियन पेस्ट थोड़ा सा भुने के बाद हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग टमाटो पेस्ट भी ऐड करेंगे। जो रोस्टेड मसाले का पेस्ट है उसी पेस्ट को हम लोग इसी वक्त ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मसालों के साथ अच्छी तरह पक के बाद हम लोग इसमें क्रैब के पीसेस ऐड करेंगे। इसी क्रैब्स को हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 15 to 20 मिनट्स तक अच्छी तरह पकाएंगे। रेसिपी परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसको हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे और इमीडिएटली पैक करके हम लोग नीडी पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
इसी मज़ेदार रेसिपी को आप भी अपने घर पे कोशिश करिए और फेसबुक पे नवाब्स किचन ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस भी देखिए और पेज को भी फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।